Hello everyone. Today class topic chapter number 2, class 10 polynomial. Before polynomial, there are some basic terms and some basic key which we know that the first term is constant. The first term, what do you mean by constant? Constant means the fixed numerical value that cannot change according to condition or situation. Just suppose 5, 10, 1000, 50, 72, they all are what? Constant. Second term is your variable. Variable means the value, the numerical value that can change according to condition or situation. Suppose I have a situation 5x equal to 20. That means I can say x equal to what? 20 upon 5 will be equal to 4. Suppose I have a question 5x minus 15 is equal to 25. Then I can say 5x equal to 25 plus 15 will be equal to 40, or I can say x equal to what? 40 upon 5 will be equal to 8. That means condition change, the value of x change. There are two terms. The first one is constant, the fixed numerical value that cannot change according to condition or situation. Second one, variable, the value that can change according to condition or situation. Then after that, your next term is what? Term. Terms. The combination of variable and constant. The combination of variable and constant is known as what? Terms. Suppose I have 5x or 7xy or 3xyz. All these are what? This is term. This one also a term. This one also a term. Got it? Then after that, your next topic is what? Algebraic expression. Algebraic expression. Algebraic is what? The combination of terms with mathematical operator. The combination of terms with plus or minus sign. Suppose 3xy minus 7yz plus x square plus 3x square y. Each part, each one is known as what? Term. Each one is known as what? Term. And each term is separated by what? Plus or minus sign. The combination of terms with plus minus sign is known as what? Algebraic expression. And after that, our first topic of class 10, and after that, our first topic of class 10 of chapter number 2, which is our polynomial. Which is our polynomial. The first question, what do you mean by polynomial? Polynomial is an algebraic expression. Polynomial is an algebraic expression in terms of one variable. In terms of one variable. Suppose x square 3x plus 5. Suppose I have 5 of x equal to x to the power 4 plus 7x minus 8. They all are what? Polynomial in terms of one variable. One variable, which one is what? After x. The polynomial is what? Algebraic expression in terms of one variable is known as what? Polynomial. And after the polynomial, the second term is related to this topic. This is your degree. Degree is what? Maximum power of maximum power of variable in the given polynomial. Maximum power of variable in the given polynomial is known as degree of that polynomial. Remember that जो आपका degree होगी, which will be always a whole number. Always a whole number. क्या होगी हमेशा? एक whole number, एक positive integer होगी included with 0. Degree कभी भी आपका fraction में नहीं होगी. डिग्री कभी भी आपका नेगेटिव में नहीं होगी. इन तीन बातों को हमें याद रखना है. गॉट इट?
ऑन द बेस और डिग्री क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल क्या गया? क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री, डिग्री पर बेस जो पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन हुआ, हम बात करते हैं, लिसन हियर, डिग्री, यहाँ पर टाइप्स। अब सपोज बात करता हूं, अगर आपकी डिग्री 0 है देन इट इज नोन एज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। रिमेंबर, अगर आपकी डिग्री 1 है, if then the types of polynomial is what? Ax plus b, where a and b both are constant, although याद रखना the value of a is not equal to 0, and this is your known as linear polynomial. If your degree is 2, then it is known as quadratic polynomial. Again, remember the value of a will never be equal to 0, and this is known as quadratic polynomial. If degree is 3, then it is known as cubic polynomial. Remember, the value of b, c, d may be equal to 0, but value of a will never be equal to 0. This is known as cubic polynomial. If degree is 4, then it is known as biquadratic polynomial. Biquadratic polynomial, and in the form of ax to power 4 plus bx cube plus cx square plus dx plus e, where a, b, c, d all are real number or are constant. याद रखना, the based on degree जो polynomial define किया गया, आपके polynomial कितने टाइप के थे? There are 4 types of polynomial. Remember. इसके बाद क्या आया था, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक आया था, जो हम बात कर रहे हैं बेसिकली जीरो ऑफ पॉलिनोमियल. जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, रिमेंबर, इट्स जस्ट बेस्ड ऑन क्लास 9th टॉपिक, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल. दैट मींस द वैल्यू ऑफ x फॉर विच fx equal to 0. The value of x for which fx equal to 0. That means zero of polynomial is what? The value of x for which fx equal to 0 means. अब जनरली क्वेश्चन लेके बात करता हूं. सपोज अगर मैंने आपको क्वेश्चन दिया, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल p of x equal to 3x minus 7 means the value of x for which px equal to 0. You know, बता चुका मैं, for 0 p of x will be equal to 0. That means I can say 3x minus 7 will be equal to 0, 3x equal to 7 or x equal to 7 upon 3. अगर मुझे वेरिफिकेशन करना हो आंसर का, मेरा आंसर सही है या रॉन्ग है, then I can say, अगर मैं at x equal to 7 upon 3 p of x की वैल्यू निकालूंगा, मेरा आंसर क्या आएगा? 0 के इक्वल आएगा. You can check. 3 to 3 cancel out. This will be equal to what? 7 minus 7 will be equal to 0. That means the value of x for which fx equal to 0 is known as 0 of that polynomial. Remember, zero of polynomial by graphical form, by graphical method. एक बात को और याद रखना, अगर मैं आपसे ग्राफ लेके बात सुनना चाहूं, तो आपको पता है कि ये अगर आपका y एक्सिस होता है and this is your x axis, and you know this is your x axis and this is your y axis, this is your origin. And one more important thing we know very well, on x axis y is equal to 0, on y axis x equal to 0. अगर मेरी कोई इक्वेशन y is equal to px की फॉर्म में लिखी है, सपोज एनी इक्वेशन
I'm saying x square plus 3x plus 7, तो मुझे पता है जो मेरा px है वो मेरा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो मेरा रिप्रेजेंट कर रहा है y of x को। ऑन x एक्सिस वैल्यू ऑफ y विल बी इक्वल टू 0, मींस अगर मेरा ग्राफ x एक्सिस को जितने पॉइंट पर कट करेगा for the given polynomial y equal to p of x, they all are known as they all are known as zeros of that polynomial। Suppose अगर मैंने ग्राफ बनाया है तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि ये मेरा ग्राफ है, ये x एक्सिस को 3 पॉइंट पकड़ कर रहा है। एक पॉइंट ये है, the second point, and this one is your third point। that means number of that means number of zeros will be equal to 3। got it? अगर यही ग्राफ बना रखा है मैंने आपका लाइक दिस, ऐसे दे रखा है मेरा ग्राफ, आपका ये जा रहा है, सपोज दिस इज योर y इज इक्वल टू px की फॉर्म है। अगर मेरा ग्राफ x एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, साफ दिख रहा है, या एक पॉइंट यहाँ पे कट कर रहा है, एक पॉइंट यहाँ पे कट कर रहा है, मींस इसके कितने जीरोस हैं, इसके 2 जीरोस हैं। यही लोग लेके बात करते हैं। अगर मैं सपोज आपको ग्राफ दिया, ये है, दिस इज योर x एक्सिस, दिस इज योर y इज इक्वल टू p ऑफ x। अगर मेरा ग्राफ कुछ ऐसे जा रहा है, मींस मेरा ग्राफ x एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा है, इस सिचुएशन में नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, जीरो। मींस ग्राफ मेरा x एक्सिस को जितने पॉइंट पर कट करेगा उसके उतने क्या होंगे, नंबर ऑफ जीरोस होंगे। दिस इज द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। साथ में कुछ बातें और याद रखनी है जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे। रिमेंबर देयर सम बेसिक प्रॉपर्टीज कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर विल बी इक्वल टू व्हाट, a प्लस b होल स्क्वायर minus 2a। Similarly, remember a minus b whole square is equal to what? A plus b whole square minus 4ab। Remember, a cube plus b cube is equal to what? A plus b whole cube minus 3ab into a plus b। नेक्स्ट क्लास में इन सब टॉपिक के साथ टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, तब तक आप इसको रिवाइज कीजिए। ओके।